Hello you guys, welcome back to my channel. For today's video, I am going to make some DIYs with wool. Wool is the thing which you will get very easily in the market and at the best prices. Like you can get it for 10 rupees. So I thought why not to make some more DIYs for all of you guys. So in today's video, I am going to share some DIYs with wool. They are pretty cool and unique items. So stick around till the end. And now, without wasting much time, let's just get right into the video. So for the first one, I'm going to make Pom Pom. Sorry, lots of Pom Poms. Yeah, we'll need lots of Pom Poms for this DIY. So to make Pom Pom, I'm just wrapping this wool around my 3 fingers. As you can see, you can wrap it according to your need and the thickness you want. मैंने 60 to 80 times wrap किया है. It totally depends upon you. फिर उसको सेंटर से भी टाई कर लो अच्छे से and cut it. Now we are going to cut around. My pom-poms are ready. अब बस सिर्फ सुई धागा लेना है और सारे पॉम्पम्स को अंदर इंसर्ट कर देना है. Just make sure that you take a needle which is of thicker hole. तो इससे क्या होगा, आपको आसानी रहेगी उसमें वूल इंसर्ट करने में और पॉम्पम्स इंसर्ट करने में. And yes, we are done with the first step of this DIY. Now for the second step, we are going to make some tassels. मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में दिखाया हुआ है कि कार्डबोर्ड से टेसल्स कैसे बनाना है. फॉर दिस टाइम आई एम यूजिंग दिस मोबाइल. इससे क्या होता है, बहुत आसानी होती है और लेंथ एकदम परफेक्ट आती है सारे टेसल्स की. अगर आपको कार्डबोर्ड से करना है तो मैं वो वीडियो ऊपर लिंक भी कर दूंगी. Now again we are going to insert all the tassels in this wool. बस इस बार मैं सुई की जगह पे ये थ्रेडर ले रही हूँ. जनरली इसको लोअर गारमेंट्स में नाडा, इलास्टिक या ऐसा कुछ इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं. तो आप ऐसा भी शॉप पे बोलोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा. Yeah, we are done. So for the second DIY, I am taking this phone cover and मैं इस पे पूरे पे फेविकॉल लगा दूंगी.
नाउ इफ यू रिमेम्बर, हमने बहुत सारे टेसल्स बनाए थे, राइट? तो उसमें जो हम कटिंग करते हैं वो सारे पीसेस मैंने संभाल के रखे थे और वही सारे पीसेस मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। जस्ट मेक श्योर कि कैमरा पे या फिर जो आपके मोबाइल का सिंबल हो उस पे ना लगे। अगर लग भी जाता है तो हम पीछे से उसको निकाल सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ जस्ट टू गिव अ डिफरेंट लुक, मैं ये पिंक वूल ले रही हूँ और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। एंड नाउ I am going to stick all these pink woolen pieces as well on the mobile cover. But इसको मैं सिंगल लगाऊंगी ताकि ये थोड़े से पोर्शन में आएंगे और अच्छे से स्प्रिंकल जैसा लगेगा। After completing, just press thoroughly on the whole mobile case और उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए, सूखने दो उसको 2 से 3 घंटे के लिए। And yeah, it looks exactly like donuts with some sprinkles on it. I loved it. Now for the last one, I am taking this greased container जिसमें मैं पुट्टी से पूरा फिल कर दूंगी एक पेंसिल रखकर। वूल का DIY और टेसल्स ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। आई एम गोइंग टू मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेसल्स फॉर दिस वन। मैं ये रिंग ले रही हूँ और उसमें टेसल्स अटैच कर दूंगी। 2 से 3 नॉट लगाओ और सारे टेसल्स अटैच कर लो। हाँ, सारे नहीं, थोड़े से बाकी भी रखने हैं। अब मैं क्या करूंगी कि 2 टेसल के बीच में एक लंबा सा थ्रेड लगाऊंगी और दूसरा टेसल उसके नीचे अटैच करूंगी। तो वो क्या होगा कि हमारे पास 2 लेयर्स बन जाएंगे टेसल्स के, बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे ही हमें पूरी रिंग में करना है। Now comes the crucial part of this DIY. इसमें मैं एक बैंगल ले रही हूँ और 3 बाजू से उसको तार से अटैच कर ली हूँ और दूसरा एंड जो है वो मैं अपनी मेन वाली रिंग जो हमने टेसल्स वाली बनाई है उसमें लगा दूंगी। और उसको भी मैं थ्रेड से टाइट कर लूंगी और सर्कल लगा दूंगी। नाउ आई एम टेकिंग दिस पाइप। एक्चुअली ये मेरे पर्दे का पाइप था, but I've painted it white and now we are just doing wiring. And as usual, my dad is helping me with this wiring and attaching holders and all this stuff. And now with the help of glue gun, I'm attaching this holder with the pipe. And yeah, we are done. Now understand the whole portion. पहले ये रूफ हमने बनाया
उसको हमने बैंगल से अटैच किया, वो बैंगल हमने होल्डर पे लगाया, होल्डर हमने पाइप से अटैच किया और फाइनली पाइप जो है वो हमने जो पहले वाला जो बेस बनाया था पुट्टी का उसमें इंसर्ट कर लिया। It was it for today's video. I hope you all enjoyed watching this video and these DIYs that are really cute and amazing, and my favorite was the lamp one. I know it takes a little bit of much time, but I can assure you it is worth investing time in this lamp, and it looks so amazing in your room. I have kept this standing lamp in my room, and you will be soon seeing this lamp in my room. So stay tuned for the room tour as well. And if you like this video, then please do like, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.